दोस्तों गूगल पिक्सल ने अपनी अगली नंबर सीरीज़ गूगल पिक्सल 10 लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसी फ़ोन का सैमसंग A56 5G के साथ में हम जानेंगे इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फ़ोन का बैटरी अच्छा चलने वाला है और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा फ़ोन हमें गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे वीडियो चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे हम बढ़ते वीडियो में और जानते हैं कि 80,000 रुपये में हमें गूगल पिक्सल 10 लेना चाहिए या फिर 40 से 45,000 रुपये की रेंज में हमें सैमसंग का A56 5G फ़ोन लेना चाहिए। इन हैंड फील, फोन थिकनेस, मोबाइल फोन वेट, बिल्ड क्वालिटी, फ्रंट एंड बैक, IP रेटिंग, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले टाइप, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, टच सैम्पलिंग रेट, डिस्प्ले ब्राइटनेस, डिस्प्ले प्रोटेक्शन, HDR सपोर्ट, कलर डेप्थ, डिस्प्ले डॉल्बी विजन, OS and UI, एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड OS अपडेट, परफॉर्मेंस, चिपसेट, CPU प्रोसेसर, CPU octa-core, GPU, AnTuTu स्कोर, स्टोरेज वेरिएंट, स्टोरेज टाइप, मेमोरी स्लॉट, मेन कैमरा, मेन कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, मेन कैमरा OIS, फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग, कनेक्टिविटी, नेटवर्क टाइप, वाईफाई, ब्लूटूथ टाइप, NFC सपोर्ट, केबल टाइप, मल्टीमीडिया, हेडफोन जैक, स्पीकर, लॉक अनलॉक ऑप्शन, प्राइस,